Children, 12th we have to see from the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees and the angle of depression of the foot of that tower will be 45. You have to determine the height of the tower. Okay, so somewhat like this your figure comes out to be. See, we have been given a 7-meter tall building and उसके सामने एक टावर है and इसके टॉप से बोल रहा है. ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग the elevation of the top of the tower, तो elevation ऊपर को जाता है, top ये हो गया tower का, is supposed to be 60 and the angle of depression of the bottom of the base of the tower is supposed to be 45. अब चाहे आपको elevation लेना हो या depression लेना हो, you are supposed to have a horizontal line from the observer's line. ओके, सो यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो ए पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर की है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट ऊपर को ये 60 डिग्रीज है एंड ये डिप्रेशन 45 है. अब ये फिगर, ये आपका जेड कंप्लीट हो रहा है. सी, दिस इज योर बेस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हियर दैट इज योर ट्रांसवर्सल. सो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. तो ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा. एंड दिस फिगर आउट हियर विल बी अ रेक्टेंगुलर फिगर. ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, 90 का एंगल होगा. सेम वे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच में 90, तो ये रेक्टेंगल सा फॉर्म हो रहा है एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो अगर हमें ए बी 7 गिवन था, तो अब हमने जब ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया, सपोज ई इज द पॉइंट वेयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन मीट्स द टावर, देन आपका ई डी का लेंथ भी 7 हो जाएगा. एंड अगर आप डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द टावर एंड द बिल्डिंग, x सपोज करते हो, तो आपका ये लेंथ भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ये भी x आ जाएगा. ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर. वन इज हियर अबव जिसमें आपको एंगल पता है x suppose and h suppose is this height, and then there is another, this is also a right angle triangle but ये clearly दिख रहा है हमें with base, तो we are considering this. so यहाँ आपको एंगल 45 बताया जिसकी opposite sides आपको पता है. opposite side आपको given है 7 and ये base x है. ओके, ये x आप यहाँ यूज करोगे. सो फर्स्ट वील अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल हियर एंड विथ फ्रॉम देयर वील फाइंड आवर x एंड इस x को फिर हम यहाँ यूज करते हुए ये h निकाल लेंगे बिकॉज आवर क्वेश्चन वाज टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर. तो टावर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो दिस लोअर पोर्शन ऑफ इट इज 7 बिकॉज वी गॉट अ रेक्टेंगुलर फिगर एंड ये अबव वाला हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के h भी निकाल लेंगे. तो h + 7 विल बी द हाइट ऑफ द होल टावर. गॉट इट? ओके, सो एक्सप्लेनिंग एंड ऑल यू कैन डू if you want कि हमने क्या क्या लिया है. otherwise AB is the building and CD is the tower, like that. so from A the elevation of C is 60 and all that. otherwise if you're falling short of time आप सीधे भी फिगर बना के कर सकते हो. but better if you can explain now. so in triangle ABD, so this triangle I've taken first. in triangle ABD, tan 45 is opposite AB upon BD. Opposite was 7, base suppose we have said is x. so from here we can find the x. tan 45 is 1, cross multiplying, so your x would also be 7. तो ये हमें 7 पता चल गया, तो ये भी 7 हो गया ऊपर opposite sides. okay, now the other triangle, now we move on to this bigger triangle that is AEC जिसमें हमें tan 60 दिख रहा है. tan 60 का opposite that is h upon base is again x. ओके, सो tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपका ये x यहाँ चला गया, √3x. दिस इज वैल्यू ऑफ योर h. x आप ऑलरेडी ऊपर इवेल्युएट कर चुके हो, पुट दैट वैल्यू. सो योर h विल कम आउट टू बी 7 into √3. ओके, 7 √3. नाउ योर क्वेश्चन वाज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर विच आई सेड इज 7 प्लस h जो आप निकालते हो, तो h आपने निकाला है 7 √3, so that will be 7 √3 plus 7. 7 can be taken common. We can write it as 7 bracket √3 plus 1. Okay. Next is saying that we have, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. One ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse. Then you have to find the distance between these two ships. Okay, so this is my 75-meter lighthouse. Suppose this is the water level, again will be horizontal. So is water level mein there are two ships, one at C, one at D. The elevation, the angle of depression बोला था उसने. लाइट हाउस के टॉप से आप डिप्रेशन ऑब्जर्व करना है, तो आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी. जब भी डिप्रेशन की बात करता है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के फिर एंगल दिखाना है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर
and the depression of one of the ship is 30 and of the other is 45. तो 45 वाली nearer होगी, 30 वाली थोड़ी दूर होगी. जितना दूर होगा उतना angle of elevation छोटा होता जाएगा. Okay, so these are your two ships and they were on the same side. ऐसा नहीं एक इधर, कभी opposite side भी हो सकता है. So one here, the other there. Okay, but this time it was said clearly they are on the same side. So hence we've got again two right angle triangles ABC and ABD. दोनों में अब आप trigonometry लगाओ. See, आपको actually angle of depressions given थे, but वही alternate angle की property लगेगी. Z form हो रहा है. Okay, so 30, this will become 30. If this was 45, this alternate will become 45. Now these two triangles you can apply trigonometry. Okay, so first we have considered triangle ABC, in which tan of 45 will be 75 upon BC. So BC will also come out to be 75. 40 राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा. 45 प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 90 180. ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. ओके, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो साइड्स इक्वल होंगी नेचुरली. सो इफ इट इज tan 45 देन योर BC इज ऑल्सो 75. तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया. 1. Now we'll move on to the bigger triangle in which we'll say tan of 30 now is again AB, opposite side वही है, upon base will be BD. BD will be you can first find this or you can write it as 75 plus x and find this directly anyhow, but I have just written it as AB which is 75 and BD पूरा लिख लिया है. तो यहाँ से BD evaluate कर लिया. क्रॉस मल्टीप्लाइंग BD will be 75 root 3. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मीन्स ये DC लेंथ आपने फाइंड करनी है. ओके, सो ये DC आपको कैसे निकलेगी? आपने BD निकाल लिया है एंड आपने BC दोनों निकाल लिए हैं. तो BD minus BC will give you the leftover DC. Hence the distance between two ships, that is your DC, is BD minus BC. 75 root 3 minus 75. Take that 75 common. 75 root 3 minus 1 meters is your answer. Okay, now the 14th one, children, is your, which says that we have a 1 point. This time the figure is given. I have not made the figure, but when you pair it up you will make the figure. Okay, children, in your fair copies as well. So let's see, they are saying that we have a 1.2 meter tall girl which spots a balloon moving with the wind in horizontal line. This is your horizontal line. It wasn't made there, I have made it dotted to show you. Horizontal line at a height of 88.2 meters. So ground से 88.2 meters पर इस line पे balloon move करते जा रहा है. Then the angle of elevation of the balloon from eye of a girl at any instant. Here is your 1.2 meter tall girl. उसकी eye से, तो 1.2 meter above से आपने elevation consider करना है. तो वो पहले 60 था. Then when the balloon moves further, then the elevation reduces to 30. पहले 60 था, फिर ये balloon आगे बढ़ गया, तो अब ये elevation 30 हो गया है. ठीक है? Okay, so that's what the figure is like, and then you had to find the distance traveled by the balloon during this interval. That means ये balloon यहाँ से यहाँ तक कितना distance इसने cover कर लिया है. So we need to find this length, which would be same as this length. अब यहाँ पे भी देखो आप सब rectangular figures बन रही हैं. 90 के angles हैं. ओके, अच्छा, अब आपको जो ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल आपको 1.2 अबव से मिल रहा है. सी, ये नीचे के हाइट तो छूट जा रही है क्योंकि यहीं से ऑब्जर्वेशन हो रहा है. राइट, सो वी विल हैव टू कंसिडर दिस लेंथ और दिस हाइट. सो ग्राउंड से ये 88.2 थी एंड ये गर्ल की हाइट हो जाएगी 1.2. अगेन जैसे अभी पहले हुआ था, ये एक रेक्टेंगल बनाया, तो अगर ये 1.2 थी गर्ल तो ये लेंथ भी यहाँ पे 1.2 होगा. सो टोटल 88.2 से आप 1.2 कैंसिल माइनस करोगे तो लेफ्ट ओवर 88.2 माइनस 1.2 गिव्स यू 87. सो ट्राइंगल की जो ये ऑपोजिट साइड बन रही है ये आपकी 87 बन रही है. ओके, अब ये 87 है तो ये भी 87 होगा. ये फिर आपका रेक्टेंगुलर फिगर बना है. ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर figures. Okay, now we will apply trigonometry to the triangles obtained. I have named the triangles here. Okay, you can do it, children. You can give some different names also. Okay, so I have named these triangles as I've called this point D, E, C, B, A. A, B, C ये बनाया है, A, D, E ये बनाया है. दो ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल, जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो.
So I have said that in first triangle ABC, तो इस ABC triangle में आपको दिख रहा है 60 degrees. Tan 60 will be opposite side, that is BC, which is 87 upon AC. तो यहाँ से AC इवेल्यूएट हो जाएगा, AC ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा. So AC will be 87 upon √3, rationalizing 29 √3. तो ये AC लेंथ हमें पता चल गई है. This much is 29 √3. Now we'll move on to the other triangle, right angle triangle, that is your triangle DEA, in which tan of 30 would be again DE, which would again be 87. Tan 30 is 1 upon √3, and AE is this whole length AE. So यहाँ से AE evaluate हो जाएगी as 87 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून फाइंड करना था. ओके, सो डिस्टेंस मूव्ड बाय बलून एज फ्रॉम द फिगर वी कैन सी इज दिस लेंथ BD, विच इज सेम एज EC. तो EA हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, CA भी निकाल चुके हैं. तो EA होल से CA हटाओगे तो यू विल बी लेफ्ट विद CE, एंड दैट CE इज गिविंग यू the distance moved by balloon. Okay, so hence the distance traveled by balloon is 87 √3 AE minus AC, that is 29 √3, which is 58 √3. Okay,